Understand? No, no, just a minute. Right. So, good evening, everyone. This is Anish, and I'm here on behalf of the National Law Training Institute. Today, we have among us Daksh Jain, who scored a very impressive rank of 39 in CLAT 2024. Daksh is known for his special abilities in mathematics, and this is also evident from his very impressive score, that is 10.75. Barring one question, he got uh, all the other ones correct, and if he would have got that one question right, he would have got 12 on 12 in maths. So he believes that he has a lot to share in this section, so that all future aspirants um, can take clue from how Daksh prepared for this section for CLAT 24. And I believe if you go through this video carefully, if you pay attention to whatever he's saying today, you'll also be able to match up his score or even get a better one in CLAT 2025. So over to you, Daksh. You might want to introduce yourself first, and then it's all yours, whatever you want to present. Yeah. So, hello everyone. Uh, as Anishbia said, I am Daksh and I got All India rank 39 in CLAT 2024. So, I guess I've got something useful for all of you. If you're good at QT, if you're not good, you will be sorted after this session. And I can guarantee you that you will be getting a perfect score if you follow everything. So, let's get started. I've got Anish, please. I I haven't. made you the host now. You can present your screen. Yeah. So Daksh, I'll be leaving the session now. Just say whatever you want to, present whatever you want to, and then leave the session. Yeah, okay. Cool. So I've presented. Yeah, you Sure. can. Yeah, we can say it. Yeah. So as it suggests, Mastering QT for CLAT 2025 by Dakshin, All India rank 39, CLAT 2024. And so the thing is, QT से हम सबको बहुत डर लगता है एंड क्यूटी बहुत बच्चों ने तो लॉ को एज अ फील्ड ही इसलिए चूज करा होता है क्योंकि उसमें हमें मैथ्स नहीं पढ़नी होती तो आप में से भी काफी लोगों ने ये करा होगा एंड मैथ्स का हम सब में एक बहुत ज्यादा डर ही रहता है नॉट इवन डर इट्स कंप्लीट ट्रॉमा तो हमें लगता है कि हाउ विल गो अबाउट इट वी वोंट बी एबल टू डू इट क्योंकि हमारे तो 10th तक की मैथ्स अच्छी नहीं थी तभी इतना मुश्किल से पास होते थे but see it's important to understand that these are two very different things and we will talk about everything is in this session so let's start with an overview uh, in this session I'll first we'll talk some general things about QT. Then we'll see the topics which are important and a brief analysis of the previous year papers, which is important. Then I'll give you guys an year-long strategy. Then we'll move to answers to some of the common questions that you students have. I'll be providing you tips and techniques. These are foolproof and 100% gonna work. And then in the end, I'll be taking your doubts at any. So just a second, guys. तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार मैथ्स का डर भगा देते हैं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैथ्स और क्यूटी बहुत अलग अलग चीजें हैं एंड जब आप थोड़ा इसकी तैयारी में आगे बढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी इन अ बेटर वे क्योंकि मैथ्स में भी गॉट बहुत ज्यादा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स बट क्यूटी में ऐसा नहीं होता इट्स वेरी बेसिक शायद अगर आपकी मैथ्स काम आएगी तो वो 8th क्लास तक की मैथ्स काम आएगी तो बहुत ज्यादा इजी होता है बट उसके लिए हमें डर तो छोड़ना पड़ेगा एंड क्यूटी की इम्पोर्टेंस क्लैट में बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर कोई भी इंसान थोड़ी भी प्रेप करता है तो दे आर गुड इन रीडिंग सेक्शंस एंड आप उसके अंदर एज नहीं पा पाते
but QT is a section which can give you a really significant edge in your prep and eventually help you in scoring a better rank and being ahead of all your competitors. तो और सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बहुत सारे बच्चे और भी होते हैं जो क्यूटी छोड़ रहे होते हैं एंड वी ऑल गॉट पीपल अराउंड अस डूइंग द सेम. तो इट्स मतलब आप अगर इसको अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो इट्स एन एडवांटेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे होते. तो हमें सबसे पहले हमारे पास्ट परसेप्शंस को भुलाना पड़ेगा कि व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट. पास्ट में हमारा जो भी था, क्योंकि तभी हम इसको एस कर सकते हैं. एंड बिलीव मी, if you want to have a decent chance of securing any of the top 10 NLUs, leave alone top 5, I'm talking about top 10, तो भी आपको QT तो करनी ही पड़ेगी, otherwise it's next to impossible. क्योंकि no one is so good at the reading sections, they are subjective, they depend upon the opinion of the paper. तो इसीलिए you've got to be acquainted with QT. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन अदर सेक्शंस, क्योंकि जब सारे इतने सारे सेक्शंस रीडिंग ओरिएंटेड होते हैं तो योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग इन अ डिफरेंट वे एंड इट गेट्स टायर्ड. So if you will solve QT, you will be having a section like that. So it acts as a refreshment for your mind. So let's see अब हम QT पढ़ेंगे and will not be leaving it. And we've got enough time for the same as well. We've got 12 months, which is more than enough. So starting off with the topics to study, तो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता. बहुत वीडियोस और भी आपने देखी होगी जिसमें ऐसे टॉपिक्स की पूरी 25 टॉपिक्स की लिस्ट दे दी, बट इट डजंट वर्क दैट वे. बेसिकली ऐसे 5-6 टॉपिक्स होते हैं एंड ऑल अदर आर सब टॉपिक्स व्हिच दे, अगर आप एक से एक्वेंटेड हो जाओ तो बाकियों को एज करना बहुत इजी है. तो द फर्स्ट मेजर टॉपिक इज परसेंट, which comprises of percentage, profit and loss, discount, simple interest, and compound interest. And percent is the most important topic, which you obviously got to ace, क्योंकि most of the questions आज तक जितने भी past में आए हैं, जो future में भी आएंगे, will be having it. And the next topic is ratio, which comprises of ratio and proportion, mixture alligation. Just a second, guys. I'm sorry. So it comprises of ratio, proportion, mixture alligation, partnership, and average. So these are the two topics जो अगर आप कर लोगे तो 90% of your QT is done there only. Then बाकी की 10% बचती है, which has time and work, which comprises of time and work, pipes and cisterns, time, speed and distance, train, boat and stream. तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट इफ यू प्रैक्टिस इट तो हो जाता है. Then there's mensuration, which consists of 2D geometry and very basics of 3D geometry. And probability, ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी रहता है बिकॉज इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ जाता है, विच इज अ पार्ट ऑफ 11th मैथमेटिक्स, बट उतने सारा लेवल का नहीं आता. एंड सेकेंडली इट इज इंटरेस्टिंग इफ यू ट्राई डूइंग इट. एंड आपके मैथ्स के क्यूटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग DIs can be classified into parts. There are caselets and there are graphs. So caselets comprises of Venn diagram. तो para based question होता है, and while solving you get them in a form of Venn diagram. तो वो आपको करना होता है. तो Venn diagram is another topic जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इसके बिना भी हो सकते हैं, बट अगर आप इससे करते हो तो द क्वेश्चंस बिकम इजी एज वेल एज यू कैन सॉल्व इट वे फास्टर. एंड बाकी क्वेश्चंस होते हैं टैबुलर वाले. यू बीन गिवन सम इंफॉर्मेशन, you got to jot it down in a tabular form and complete the table, and the questions will be asked on the basis of that. कभी कभी आपको खुद को टेबल दे देते हैं तो यू डोंट हैव टू मेक द टेबल एंड ऑल यू हैव टू डू इज कैलकुलेशंस. फिर आते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस.
तो तीन ही टाइप के ग्राफ आते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। एक स्पाइडरोग्राफ करके भी आता है, बट इट्स यूजुअली फाउंड इन कैट पेपर्स एंड क्लैट में बहुत कम होता है। बट बेसिकली तो इन तीनों में रहते हैं। एंड क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में वैसे तो आज तक सिर्फ एक बार ग्राफ का क्वेश्चन आया है, बट देयर आर चांसेस कि ये आ सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये बहुत ज्यादा रहता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द पेपर एंड हमारा क्या लेवल होना चाहिए। समटाइम्स इवन 8 इज अ वेरी गुड स्कोर एंड समटाइम्स आपको 12 लाने होते हैं टू बी एट पार विद योर कॉम्पिटिटर्स। तो पेपर की डिफिकल्टी वेरी करती है। And while solving previous year papers, you will realize the difficulty has been, and so this is a brief summary of it. 2024 में the paper was super easy, so I had obviously worked much harder than the difficulty of the paper, but you can't tell. So the topics were percentage and ratio and proportion. That's it. उसके अलावा कुछ नहीं आया था। The questions were caselet based, पैरा बेस्ड क्वेश्चंस थे। उनमें भी लेवल बहुत छोटी थी, बिल्कुल बड़ी नहीं थी, कैलकुलेशंस भी इजी थी। एंड द आइडियल स्कोर फॉर दैट पेपर हैड टू बी 12। 2024 में केवल सैंपल पेपर्स आए थे, 25 क्वेश्चन ईच के, चार आए थे। तो the questions there were puzzles, percentage, ratio and proportion, and पहले दो जो आए थे they were quite complex puzzles जो हम मॉक्स वगैरह में कम एक्सपेक्ट करते हैं। तो it was new and I guess you should solve these। उनमें जो आंसर की कंसोर्टियम ने रिलीज की थी they were also incorrect but the questions were tricky as well। एंड उसके बाद आखिरी दो क्वेश्चन जो आए थे वो केस स्टडी बेस्ड थे, तो दोनों में कैलकुलेशन टफ थी। एंड एक में इट वाज फाउंड जो लास्ट बार आया था उसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शंस थे। So it wasn't value based, but it was like which of the following is not true, and then you've been given four options. So it was statement based as well. So there were lengthy questions and दोनों में ऐसा ही था, चारों का लेवल वाज गुड, none of them wasn't easy। and 2020 talking about 2023, the questions were percentage, ratio, proportion, average, simple interest and profit loss। तो सिंपल इंटरेस्ट से शायद एक क्वेश्चन था एंड पजल लास्ट वाला एक सेट था which was a set based on weights of different people and it was kind of tricky जिसमें cannot be determined करके options थे। तो many people got it wrong and it was very lengthy as well। तो till date अभी तक पैटर्न चेंज होने के बाद जितने भी पेपर्स में उनमें 2023 was the most difficult। it was quite lengthy and उसके अंदर you needed smart work क्योंकि 4-5 questions were very easy, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते। 2-3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस वर डुएबल एंड बाकी क्वेश्चंस बहुत लेंथी थे एंड इट वाज द 150 क्वेश्चंस पैटर्न। तो उस टाइम पे यू हैड टू डिवोट टाइम टू अदर सेक्शंस एज वेल। आप क्यूटी को बिल्कुल वो नहीं कर सकते थे। तो इट वाज डिफिकल्ट एंड 8 to 10 वाज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। एंड इसने बेसिक क्वेश्चंस तो तीनों 2022 में परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस आए थे। द क्वेश्चंस वर अगेन वेरी इजी। ideal score would have been 15 and the questions were again caselet based, no surprises, super easy। 2021 में भी same topics were asked। 2020 just a second guys, 2022 में परसेंट जो क्वेश्चन था
प्रॉफिट लॉस का इट वाज ओनली वन क्वेश्चन which was asked कि calculate the profit, so it wasn't much. तो ज्यादातर percentage ratio proportion, these are the topics which are regularly being found, but it doesn't mean कि यही आएंगे, क्योंकि जो सैम्पल पेपर्स रिलीज हुए हैं उनमें डिफरेंट टॉपिक्स आर फाउंड एज वेल. So talking about 2021, so it was percentage ratio proportion average, again super easy. 15 would have been an ideal score, and the questions were case state based only. But 2020 में there was a different thing, क्योंकि उसके बाद वाले सारे पेपर्स में केस सेट आया, बट इसमें ग्राफ बेस्ड, तीनों क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड है. One was a DI on ratio proportion percentage average, and दो DI दो graphs पे mensuration पे, where you had to calculate some area of tables and chairs. And the questions were easy, but mensuration as a topic in itself is a bit complex. So students who did not prepare it obviously found it impossible to do. And genuinely, I guess one of the questions was incorrect, which took time of a lot of students, and this was the difference. And I feel the CLAT 2025 QT will again be on the difficult side, because if in the previous year the paper is too easy, so there's a tendency to make it super difficult the next time around. So expect the paper to be difficult this time around. I'm not stating it or something, but there are chances. So we've got to be well prepared, which we will be. So here we'll be devising an year-long strategy. So I please don't watch. कोई भी YouTube पे बोल रहा हूँ कि I can tell you do this or do that. It doesn't work. So the same goes with me saying you got to be you got to turn everything into your schedule, क्योंकि every person is different and सबके लिए बहुत अलग अलग स्ट्रेटजी होती है. तो I can give you a very general idea, but the best thing to do is to devise it yourself and put it in your schedule according to your needs and requirements. So generally, so I'll be telling you. It depends on your knowledge level, on your mock scores, and everything. So, yeah. So, rating rating yourself on a scale of 10. So, if you are in the category of 0 to 3, which means that you are completely starting from uh, scratch and you don't know anything about QT, you are not acquainted with the basic tips and tricks that you should be knowing in percentage, ratio, proportion, and everything. Your mock scores hover around 0 to 4, which means that you are not able to solve more than one DI anytime. So you guys need to give more time to it, which means that you can devote some time for QT daily. So first thing you've got to do is be clear with your concepts. So the topics which I stated above, you've got to clear them in a chronological order. तो सबसे पहले परसेंट, देन रेशियो, proportion,
And then likewise, so if you will be clear with all the topics, तो you can move forward. Immediate results नहीं मिलेंगे. Believe me, पहले 5 दिन जब पढ़ रहे होंगे, you will feel like no, I am not made for it. Let's end it. मेरे से तो क्यूटी नहीं हो पा रही. But keep trusting the process. इसमें immediate results नहीं आते. You've got to work hard continuously, and then you'll find the results. So थोड़ा give yourself some time. अच्छे से 1 महीना at least do concepts. So what you guys can do is रोज का 1-1.5 घंटा, 1 to 1.5 hour, based on your capacity, uh, on how much you study in a day. I don't know. So जैसे I was very good at it, but I used to study for only 6 to 7 hours. So my QT time used to be in that ratio. तो आप जितना पढ़ रहे हो, प्लीज दिन का हर ऑल्टरनेटिव 2/5 पार्ट यू कैन गिव टू क्यूटी अभी, क्योंकि यू गॉट दैट टाइम, यू गॉट कंप्लीट 1 ईयर. तो स्टार्टिंग में यू विल बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी. एंड बिलीव मी, बहुत लोग सोचते हैं कि क्यूटी कैन बी डन इन द एंड. बहुत वीडियोस भी मिलेगी कि क्रैक क्यूटी इन 50 days, बट ये पॉसिबल नहीं होता. सो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम अभी से. तो 0 to 3 वालों को जितना भी आप पढ़ रहे हो, हर ऑल्टरनेट डे दिन का 2/5, एंड दूसरे ऑल्टरनेट डे का दूसरा पार्ट दिन का 1/5 टाइम आपको क्यूटी को डिवोट करना है, जिसमें यू विल बी डूइंग कॉन्सेप्ट्स अभी. सो स्टडी द कॉन्सेप्ट, मेक नोट्स, लर्न फॉर्मूलाज, एंड देन उसके बाद डू वन लाइनर्स. सो दैट्स हाउ यू नीड टू गो अबाउट इट. देन अभी आपको कुछ भी हो जाए, मॉक्स में 100% आपको क्यूटी को उसका ड्यू देना है. तो विच कैन बी 15 minutes, विच कैन बी 20 minutes. आई यूज्ड टू गिव 15 to 20 minutes एज वेल. तो आपको वो टाइम डिवोट करना है. आपसे अगर सॉल्व नहीं भी हो रही तो भी यू हैव टू रिमेन इन दैट सेक्शन, क्योंकि अगर आप ये वाला टाइम क्यूटी की वजह किसी और सेक्शन को दोगे, तो यू आर गेटिंग लेथार्जिक इन दैट सेक्शन एज वेल. एंड इवन जब आप क्यूटी में अच्छे हो जाओगे, तब भी इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि आपने दूसरे सेक्शन को इतना ज्यादा टाइम देने की आदत डाल ली है. तो इट्स इम्पोर्टेंट, चाहे आपका कितना भी मॉक में स्कोर आ रहा हो, आपको मॉक्स में क्यूटी को उसका 15 मिनट का टाइम 100% देना है. कुछ भी हो जाए, दूसरा सेक्शन कितना भी छूट रहा हो, बट क्यूटी को उससे 15 मिनट देने ही है. बाद में वील अडैप्ट टू इट. तो 0 to 3 वालों को बट अभी डीआईज लगाने की उतनी जरूरत अभी स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि देन इट कैन बी वेरी डिमोरलाइजिंग जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो एंड देन तब भी आपसे डीआईज ना बन रही हो, क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सेम. तो जब आपके 50-100 वन लाइनर्स आप लगा चुके होंगे, तो जब आप 50-100 वन लाइनर्स लगा चुके होंगे, तो यू विल बी गुड टू गो. तब तक नहीं करना. फॉर पीपल हु आर maybe 4 to 7 can rate themselves as 4 to 7 out of 10 in QT. Uh, it's important कि so you guys will be must be getting a score of 6 to 8 around. इस टाइप का स्कोर आपका मॉक्स में आ रहा होगा. तो what you need to do is आप क्यूटी को जितना भी टाइम डिवोट करो, वैसे तो आई रिकमेंड कि रोज ही क्यूटी को टाइम दो, बट आपको उतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है. तो इफ यू आर गिविंग 1 hour, कभी कभी 1 से 1.5 hour, तो इट विल बी मोर देन इनफ. कभी कभी if you wanna skip it, you can do it, but find out the reasons why you aren't able to ace it completely. So there could be multiple reasons for the same. You are not good at speed. You are not well acquainted with the topics. Many factors. So
सबसे पहले, दिस इज फॉर एवरीवन, कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर हो जाने चाहिए। तब वी मूव टू द सेकंड पार्ट कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू नाउ गेट रिजल्ट्स इन क्यूटी। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, यू कैन नॉट हैव एनी आइडिया। एंड जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो इट्स अबाउट की you are able to understand the question or what, so you can work upon it. बट सबसे पहले सभी को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ये वाले ग्रुप वाले डीआईस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इफ यू आर डूइंग मैथ्स फॉर एन आवर, 15 minutes should be given to the DI part and 45 minutes to the concept part. And the people who usually solve 3 DIs and kabhi kabhi they are able to solve 2, so you are on the right path. You must be well acquainted with the concepts. You must be knowing them very well. तो पिक आउट द टॉपिक्स जो आपके प्रिपेयर्ड नहीं है, हो सकता है आपके मॉक्स में वो अभी तक नहीं आए हो। तो पिक आउट दोस टॉपिक्स, पॉलिश योरसेल्फ इन देम। जब वो टॉपिक्स खत्म हो जाए, तो व्हाट यू शुड डू इज यू कैन स्टडी क्यूटी ऑल्टरनेट डेज। एंड जब आप क्यूटी पढ़ भी रहे हो, तो इफ यू आर स्टडीइंग 1 घंटा, तो आधा घंटा शुड बी डिवोटेड टू डीआईस एंड आधा घंटा यू कैन डू वन लाइनर्स ऑफ द टॉपिक्स यू नो। तो जस्ट हर टॉपिक के दो दो तीन तीन वन लाइनर लगा लिए, तो इट विल बी अ क्विक रिविजन। तो दैट्स इट फ्रॉम द ईयर लॉन्ग स्ट्रेटेजी पर्सपेक्टिव। बट इट्स इम्पोर्टेंट कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो थ्रू योर क्लासेस, एंड उसके बाद वन लाइनर्स लगा। जब भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, तो उसके एटलीस्ट 25 50 100 वन लाइनर्स अलग अलग टाइप के लगा लो। तो इफ यू फाइंड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन डीआई, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड 0 to 3 वालों को सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना है। एंड आई रिकमेंड कि वो 1 महीने बाद डीआई वाला पार्ट चालू कर सकते हैं। So I'll be answering some of your common questions. Many of you have the thing कि I want to succeed in QT, but I don't know how to start. So uh, the best thing to do is कि मतलब if you really want to do it, so tell someone कि I want to do it, maybe one of your mentors or your friend or your parents, कोई भी। तो when you tell them, so there's a certain commitment that you made, and when you commit to something, so keep doing it. So at least commit कि I do QT for 25 to 30 days, no matter मुझे हो रही हो नहीं हो रही हो, रिजल्ट्स आ रहे हो नहीं आ रहे हो, मजा आ रहा हो नहीं आ रहा हो, बट 25 30 दिन मैं सिर्फ क्यूटी को दूंगा या दूंगी। एंड कमिट इट टू समवन एंड क्रॉस चेक रोज। So ask that person to confirm with you, to check with you कि have you completed your task. So these things help, वरना if there is no commitment, so there's chances of procrastination and all, आज नहीं कल कर लेंगे। तो these things should not happen. शुरू में if you get result, तो then these things are not an issue. Many of you have the question कि how much time should be devoted on a daily basis. I just told it abhi. Uh, it depends person to person. मैंने खुद में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता था क्योंकि आई वॉज गुड एट इट। आई डिड हैव फ्रेंड्स जिनके who lied in the 0 to 3 category, but so they used to give time रोज, पर उतना ज्यादा नहीं। एंड इफ अगर आप एक सिटिंग में ज्यादा देना चाहते हो, तो यू कैन डू इट इन ऑल्टरनेट डेज। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, बट ये करनी है। तो बाकी इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आइडियल देखा जाए तो आई गेस 1 घंटा इज गुड। एटलीस्ट 1 घंटा तो रोज देना ही चाहिए। ये बहुत बच्चों को रहता है, हाउ शुड आई गो अबाउट माई डाउट्स। तो
जब हम क्लासेस अटेंड करते हैं तो सिंस वी डू हैव द वी हैव कॉन्टोफोबिया, तो इस चक्कर में वी डू हैव डाउट्स बट हम पूछ नहीं पाते। ऐसा होना बहुत ज्यादा पॉसिबल है एंड इट्स ऑलराइट, मतलब ऐसा कुछ। सो द फर्स्ट थिंग इज कीप योर ईगो इन द साइड। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो कीप ऑन आस्किंग। आप जिस भी पर्सन को ट्रस्ट करते हो, योर टीचर, योर मेंटोर, कीप ऑन आस्किंग जब तक क्लियर नहीं हो, बिकॉज यू आर बेसिकली पेइंग फॉर द सेम थिंग। एंड इफ यू गॉट अ फ्रेंड जिससे आप डाउट्स वगैरह क्लियर करते हो, तो if you're not able to clear it from the teacher for XYZ any reason, to clear it from a friend, uh, maybe your study buddy, any group, या maybe a YouTube video, कहीं से भी, but please don't keep your doubts. And another thing is कि so we got a question mock, तब हमें समझ नहीं आया, हमने 2 मिनट देखा, it was difficult, हमसे नहीं हो पा रहा था, so we left it. After the mock, while analysis, what we did was हमने आंसर की वीडियो चलाई या एक्सप्लेनेशन देखी, तब हमें समझ आ गया एंड वी थॉट कि वी आर डन। सो प्लीज डोंट डू इट। आपसे मॉक में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ क्यूटी का, तो गो बैक, सॉल्व इट अगेन, गिव इट अच्छे से 15-20 मिनट, कुछ ना कुछ करो, पेन चलाओ। देन इफ यू आर स्टिल क्लूलेस, एक बार लुक एट द सोल्यूशन, सिर्फ थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट, एंड देन ट्राई टू सॉल्विंग इट ऑन योर ओन। एंड अगर पूरा भी सोल्यूशन देख रहे हो तो आफ्टर सीइंग द सोल्यूशन 1 घंटे बाद सॉल्व द सेम क्वेश्चन अगेन। तो क्योंकि आपकी प्रोसेस, आपका माइंडसेट तभी बनता है जब यू योरसेल्फ डू इट। So seeing at a solution या seeing a video doesn't tilt your mindset to do the same question. तो it's important कि आप ये करो। एंड सेकेंड चीज, किसी भी मॉक में अगर आपसे कोई क्वेश्चन बन भी गया हो, बट तब कभी कभी हम ऐसे मॉक में ऐसा आते हैं कि यार आई कैन डू इट विद 2 ways एंड देन वी चूज वन। तो आफ्टर द मॉक ट्राई डूइंग द सेम क्वेश्चन विद द सेकंड मेथड एंड सी व्हिच इज द बेटर वन, ताकि नेक्स्ट टाइम में डाउट ना आए। सो इट्स इम्पोर्टेंट एंड प्लीज डाउट छोड़ना मत, क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस, कहीं से भी करो बट कर लेना। एंड मैंने जो मॉक वाली चीज बताई, प्लीज रिमेम्बर इट। ये बहुत बच्चों को डाउट रहता है, विच बुक शुड आई यूज फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। तो वैसे तो आप जिस भी कोचिंग के पार्ट हो, you will be having study material and all, to solve it. And the best book I feel is R.S. Agarwal. It's got everything, तो आप उसको कर सकते हो। उसमें वन लाइनर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ है। इट्स काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एज वेल। उसमें आपको फॉर्मूला एवरीथिंग का मिल जाएगा। तो एंड इट्स नॉट ऑल्सो, वो बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, तो यू कैन बाय। अदर सोर्सेज फॉर क्वेश्चंस, सबसे पहले तो आई रिकमेंड कि जो आपके मॉक्स होते हैं, तो अभी नहीं करना ये, बट व्हेन यू आर डन विद लेट्स से 15 मॉक, तो यू कैन ऑलवेज डू दिस। आप अपना पहला मॉक उठाओ एंड उसकी कोई भी डीआई लगा लो, उसके डीआई लगा लो। इफ यू गॉट लास्ट ईयर के मॉक्स, तो यू कैन डू दोज डीआईज, क्योंकि डूइंग मॉक क्वेश्चंस हेल्प्स यू मेक एन अप्रोच। तो दिस कैन बी डन कि आप पुराने मॉक्स लेके उसके क्वेश्चंस कर लो। इट्स तो इज द बेस्ट सोर्स। बाकी वी ऑल लिव इन द टेलीग्राम जनरेशन, तो हमारे पास तो भर भर के मटेरियल है फ्री वाला। तो डोंट लुक ऐसे अगर कोई मिल रहा हो, बट फ्रॉम द मॉक्स ऑफ एन ऑथेंटिक कोचिंग, just pick out the QT section and solve it. And आप सबको भी पता है कि where to get these marks.
सो ये बहुत बच्चों को रहता है, व्हाट शुड वी डू फर्स्ट, वन लाइनर्स और डीआईज। तो वैसे तो आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन एज वेल, इट डिपेंड पहले, बट आफ्टर 2 महीना जब यू विल बी 100% क्लियर विद ऑल योर कॉन्सेप्ट्स, तो तब यू कैन डिवाइड योर डे कि आधा घंटा यू विल गिव टू वन लाइनर्स just to have a revision, and then बाकी time to DIs. So that's what you can do. Should I work on concepts first without thinking about speed? तो बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि speed doesn't matter अभी, and अभी even if we'll be just clearing the concept तो हम speed तो बाद में देखेंगे। तो it's important knowing the concepts, but जब भी आप concepts के बाद one liners भी कर रहे हो या तो try doing it faster subconsciously, क्योंकि अगर आप अब तब भी ट्राई नहीं करोगे तो इट विल अगेन टेक अ होल प्रोसेस फॉर द सेम। तो जस्ट ताकि रिजल्ट थोड़े जल्दी आ जाए तो जब भी डीआई करो डू इट विथ टाइम लिमिट। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बट टाइम कंस्ट्रेंट रखोगे तो यू विल धीरे धीरे गेट बेटर। इफ देयर विल बी नो टाइम कंस्ट्रेंट तो देन वी डू गेट रिलैक्स्ड, हम धीरे धीरे कैलकुलेशन कर रहे हैं, परफेक्ट आंसर ढूंढ रहे हैं, which doesn't work. So it's important to completely clear concepts, but speed to you have to maintain from the very start. So try maintaining it. Yeah, since QT in CLAT is way too easy, why should I prepare it so rigorously? So believe me, it has been easy somehow, but it there's no guarantee कि ये easy ही आएगी कि रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज से ही क्वेश्चन आएंगे। 2020 gave us an example जब mensuration आ गया था। उसके अलावा there obviously hasn't been difficult QT section except for 2023, but QT ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि it will be easy, and as I told in the start as well, I feel कि there are chances कि अब की बार QT will be very difficult। तो एंड एक और चीज होती है, इवन इफ द पेपर इज इजी तो यू गेट एन एज अबव द अदर्स क्योंकि यू आर सो वेल प्रिपेयर्ड। तो द इजी क्वेश्चन फॉर समवन हु हैजंट प्रिपेयर्ड वेरी नाइसली, ही विल स्टिल हैव टू डू समथिंग, बट आपके लिए तो इट विल बी कंप्लीट बोनस। तो ट्रेन योरसेल्फ इन दैट, and if it's difficult तो you get a very significant edge as it happened in 2023। तो जो भी टॉपर्स थे they had a very good score in CLAT 7 8 9 10 क्योंकि it gave them an easy edge above the others। so that's why रीडिंग सेक्शंस आपको उतना एज नहीं देते, क्यूटी देता है। तो prepare it well enough। Since there's enough time, I feel I should work on my core subjects right now, and I can come to QT later. Is that okay? No, it's not. क्योंकि believe me, एंड में आपके पास करने को बहुत सारी चीजें रहती है। Plenty of things will be on your mind। एंडिंग में आप क्यूटी के बारे में सोच भी नहीं पाते। You've got GK backlog, which usually happens, GK revisions, mock scores, mental pressures, emotional health, everything comes into picture, and तब आप क्यूटी को उतना टाइम डिवोट नहीं कर पाओगे। अभी यू आर इन अ फ्रेश स्टेट, प्लीज अभी क्यूटी को टाइम दे देना। डोंट थिंक कि लास्ट में हो जाता है। ये एस क्यूटी इन 50 डेज वाले वीडियोस आर सुपरफिशियल, ये सच नहीं होते। तो अभी से क्यूटी पढ़ लो इफ यू रियली वांट टू एस इट। सो टिप्स एंड टेक्निक्स, सबसे पहले डू दीज, memorize tables from 1 to 20, squares from 1 to 30, cubes from 1 to 15, remember all the prime numbers at least till 50, and LCM HCF आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए। तो these things तो should be a bread and butter, मतलब
ये तो आपको हर सेकेंड चीज में कैलकुलेशन में काम आएंगे ही। तो these enhance your calculation in a very different way. They take you to the next level. They are basically the icing on the cake. Uh, so just a demonstration. Multiplication and division में what you can do is जैसे so जैसे people multiply 46 into 25. If you want to do 46 into 25, so most people will do it like 5 6 are 30, 5 4s are 20, 23, 2 6 are 12, 2 4s are 8 and 9. So it will be 0, 5, and 1. It will be 1150. But there is a method of doing it very, very fast. So you could have also done it in this way, 46 into 25. Forgive me for my writing. 25 6 are 150. 25 4 are 100. 100 plus 15, 115. So see how it makes your calculation very easy. So it's a multiplication technique that most people don't use. And it's very simple, very basic. So all you got to do is multiply. 25 is a very easy number. तो आपको 5 और 2 को अलग अलग करने की even जरूरत भी नहीं है. What you can do is 25 6 and then 25 4, which is very very easy. तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती है. देयर इज अ स्क्वायर वाली टेक्निक जिससे आप 50 से नीचे वाले एंड ऊपर वाले नंबर के बहुत इजीली स्क्वायर्स निकाल सकते हो. एंड दीज आर इजीली अवेलेबल. बट द थिंग इज, सो आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, यू नीड टू बी वेल एक्वेंटेड विद दीज. शायद आपको स्क्वायर 30 के ऊपर काम नहीं भी आएंगे, सो आई एम नॉट टेलिंग. पर मल्टीप्लिकेशन वाली टेक्निक प्लीज लर्न दिस. ये बहुत ज्यादा आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करती है. प्राइम नंबर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई पजल्स वाले क्वेश्चंस में दे डायरेक्टली हेल्प यू. एलसीएम एचसीएफ आई होप एवरीवन नोज दैट. टेबल्स एंड क्यूब्स तो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे. देयर इज अनदर थिंग, you should be remembering divisibility rules. I haven't written it here, but आपको divisibility rules याद होने चाहिए. तो divisibility rules कि when is a number divisible from 3 या 9. तो जब उनका सम 3 या 9 से डिविजिबल होता है, then the number is divisible. So ये वाली टेक्निक्स होती है, ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए एंड यू शुड बी यूजिंग देम व्हाइल सॉल्विंग. तो वैसे इनिशियली आप इनको यूज नहीं भी कर रहे व्हाइल डूइंग मैथ्स, तो प्रिपेयर योरसेल्फ. जब आप बाद में उस क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हो कि आई शुड हैव यूज्ड दिस, इट वुड हैव एनहांस्ड माय स्पीड, क्योंकि इट्स अ स्पीड गेम एज वेल. तो डिविजिबिलिटी रूल्स भी आपको याद रखने हैं. you've got to remember the fractions as well. fractions का परसेंटेज में कन्वर्जन होता है. तो जैसे 25% को 1/4 भी लिख सकते हैं. 1/6 को 16.67% भी लिख सकते हैं. तो ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम आता है. एंड इफ दिस वैल्यू इज बीइंग यूज्ड और आप कन्वेंशनल मेथड से करोगे, आपसे नहीं हो पाएगा एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो ये वाली चीजें याद रखना बहुत जरूरी है. कुछ कुछ आई विल बी टेलिंग यू ट्रिक्स. Uh, I don't want this session to be too long because I know all of you are prepared. So I'll be telling you थोड़ा बहुत. परसेंटेज में ऐसा होता है, ये वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं. तो अगर आपको किसी भी नंबर का 20% निकालना हो, तो ऑल यू गॉट टू डू इज मल्टीप्लाई बाय 0.2. अगर आपको किसी भी वैल्यू का 35% निकालना हो,
तो यू गॉट टू मल्टीप्लाइड बाय 0.35। किसी का भी 70% निकालना हो, यू गॉट टू मल्टीप्लाइड बाय 0.70। किसी का 89% निकालना हो, यू गॉट टू मल्टीप्लाइड बाय 0.89। किसी भी वैल्यू में अगर आपको कुछ बढ़ाना हो या घटाना हो तो देयर इज अनदर टाइप। अगर किसी नंबर में 20% बढ़ाना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 1.2, 1.20। किसी नंबर में 35% बढ़ाना हो मल्टीप्लाइड बाय 1.35, 89% बढ़ाना हो मल्टीप्लाइड बाय 1.89। तो यू डोंट नीड टू डू द होल प्रोसेस। और अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो इवेंचुअली यही आएगा। बट हमारे पास इफ वी कैन डू इट सो डायरेक्टली तो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग द सेम। किसी का भी 20% कम करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 1 - 0.2 यानी कि 0.8 से। 0.8 से तो इसीलिए किसी का अगर हमें 35% कम करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 0.65, क्योंकि 1 - 0.35। तो ये बहुत इजी है एंड इवेंचुअली यही हेल्प करती है आपको। रेशियो प्रपोर्शन में एक चीज होती है। तो जब आपको चार नंबर का, अगर दो तीन चार नंबरों का ऐसा दे रखा हो कि A/B इज इक्वल टू 1:2, B/C इज इक्वल टू 2:3, एंड C/D is 4:5. Find A is to B is to C is to D। इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाली कैलकुलेशन बहुत काम आती है। सिर्फ इसी में नहीं, एवरेजेस वगैरह इन सब में ये वाला काम आता है। तो इसमें बहुत इजी ट्रिक होती है। जस्ट राइट देम ऑल। 1 2 2 3 एंड 4 5। just it was 4 and 5। सो जस्ट यहाँ पे सारे ये वाले फिल कर दो। तो इट्स गोइंग टू बी 2 2, इधर 3। जहां पे जो भी एम्प्टी स्पेस हो वहां पे उसका नंबर फिल कर दो, उसका एडजेसेंट जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी इट विल बी 2, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे भी 4। मल्टीप्लाई दीज, यू विल गेट द आंसर। एंड अगर आप इसको कन्वेंशनल तरीकों से करोगे इट विल बी वेरी लेंथी, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट इस टाइप के मेथड से इट्स वेरी इजी। तो ये टाइप की ट्रिक्स है जो आपको, इफ यू ब्रिंग देम इन योर डे टू डे यूज, तो मतलब यू विल बी एसिंग क्यूटी परफेक्टली। तो I don't think we should be taking more of time in these things. Uh, we look to wind up the section in the next 10-15 मिनट। जस्ट कुछ काम की बातें। तो never exceed time limit decided for QT। It is very important, क्योंकि कई बार क्या होता है एंड इट्स मोस्टली happens with the students who are very good at it। तो जब आप क्यूटी में बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हो तो यू स्टार्ट टेकिंग इट ऑन योर ईगो। ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं बन सकता, आज तो भाड़ में जाए टाइम, मैं तो ये क्वेश्चन बनाऊंगा।
तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यू हैव डेजिग्नेटेड अ टाइम लिमिट, उस टाइम लिमिट में स्टिक करना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो जाए, आपकी ड्यूटी कितनी भी अच्छी है, आपके उसमें 12 ही आते, बट हमें 15 मिनट में मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। जो अलॉटेड टाइम है उसमें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करना है, उसको एक्सीड कभी भी मत करना। एंड इसकी वजह से बहुतों के फ्लैट खराब हुए, क्योंकि आपने क्यूटी को अगर आधा घंटा दे दिया तो यू हैवंट गॉट टाइम फॉर अदर सेक्शन देन। तो ये मत करना अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे तो फिर हम उसी क्वेश्चन में लगे हुए हैं। 2 3 4 मिनट में उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, एंड छोड़ने के बाद हैव अ सिप ऑफ वाटर एंड फिर मूव ऑन। डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। इट्स परफेक्टली ओके, ऐसा होता है। आई एम टेलिंग यू, क्या सीन दिस ऑल। आई हैव आल्सो टेकन इट ऑन ईगो, एंड देन वो इवेंचुअली आप ही को हर्ट करेगा। तो डोंट डू दिस। यू कैन ट्राई ग्रुप स्टडी। तो जो मैंने कमिटमेंट वाली बात कही थी कि देयर नीड्स टू बी अ कमिटमेंट, तो आप किसी को बोल सकते हो। आई थिंक ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट थिंग फॉर डूइंग दिस। Find someone like you who's also very adaptable. Try assigning tasks to each other and then complete it. Uh, check check it with the other one. Check it with each other, and then after you complete tasks, give yourself a treat. Give each other a treat. So these things matter. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, but it keeps the motivation level going. तो ऐसा नहीं होनी चाहिए कि 10 दिन बाद you cool down कि नहीं यार छोड़ दो। तो that's why group study, giving each other tips, these things do matter. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू रफ वर्क थोड़ा नीटली। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिनको पता है क्वेश्चन कैसे करना है, बट उन्होंने रफ वर्क इतना फील कर लिया कि इट्स ऑल बहुत घिस पिस हो चुका है, एंड दे देमसेल्व्स डोंट नो कि कहाँ कौन सी कैलकुलेशन हो रखी है। तो ऐसे में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगा पाते, योर माइंड इज टू फज्ड अप। तो ये बिल्कुल भी मत करना, अच्छे से जगह दे दे के करो। ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं कि आप सुंदर राइटिंग में लिख के आ रहे हो, बट प्लीज इतना नीटली होना चाहिए कि आपको खुद को समझ आता रहे। Try fitting in between two sections if it works for you. I've got multiple reasons for saying it. पहले तो एज आई सेड, जब आप एक साथ रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे होते हो, तो इट टेक्स टोल ऑन योर माइंड, एंड वो बहुत ज्यादा होता है, आपको शायद रियलाइज नहीं होता। बट आपके माइंड को जैसे, सो इफ यूर इंग्लिश एंड सीआर टुगेदर, आपने पहले सीआर करी एंड देन यू आर डूइंग इंग्लिश, तो आपके इंग्लिश में शायद सीआर वाला माइंडसेट ही रह जाएगा। ये लीगल में इट कैन हैपन, एनी सेक्शन इट कैन हैपन। तो बीच में अगर आप क्यूटी को सैंडविच कर दोगे तो इट डज एक्ट एज अ रिफ्रेशमेंट, जो मैंने पहले भी कहा था। एंड सेकेंडली, अगर आप क्यूटी को लास्ट में रखते हो तो यू फाइंड एक्सक्यूजेस टू लीव इट, कि उस सेक्शन में मेरा टाइम ज्यादा हो गया था इसीलिए मैंने क्यूटी को छोड़ दिया। एंड दीज एक्सक्यूजेस इवेंचुअली कम बैक टू व्हाट यू ओनली आर। तो ये बिल्कुल भी मत करना। कैसे भी क्यूटी को ट्राई फिटिंग इन बिटवीन। कई लोगों को होता है कि यू कांट डू इट, एंड में हो पाती है, when your mind is completely tired to solve क्यूटी कर पाते हो, इसलिए लास्ट में फेयर इनफ, बट ट्राई फिटिंग इट इफ यू कैन। Take a look, initially take a look at the DIs and then decide on the order of solving. पेपर में 3 DIs है, मैंने पहली करी, फिर दूसरी करी, फिर तीसरी करी। पहली दो करने के मैंने ये सोचा था, बट पहली दो करने के बाद मेरा टाइम खत्म हो गया। पेपर के बाद मैंने देखा थर्ड वाज द इजीएस्ट वन। तो ये चीजें होती है। जस्ट 2 सेकंड के लिए एक लुक दो, विच DI इज इजी या विच यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद, पहले वो करो। सो एक प्रायोरिटी ऑर्डर बना लो कि फर्स्ट आई डू दिस, देन डू दिस एंड देन डू दिस। सिर्फ आपको 5 सेकंड लगेंगे, बट ये 5 सेकंड आपके बहुत
बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये जरूर से करना। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, लुक फॉर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट डिजिट्स। तो लेट मी टेल यू क्या होता है, समटाइम्स हम परफेक्ट आंसर के लिए जा रहे होते हैं, तो हमने पूरा आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन ने हमें बोला है 48 into 37 निकालना है, हम पूरा बैठ के 48 into 37 निकाल रहे हैं, और उसके बाद उनमें से चारों ऑप्शन में ऐड कर रहे हैं। एक्चुअली आपको इतना करना ही नहीं होता। सो इट्स नेक्स्ट पॉइंट एज वेल, ट्राई योरसेल्फ टू डू, train yourself to do smart calculation rather than complete calculation. तो these two points are similar। तो आपने यूनिट डिजिट्स देख ली, आपकी यूनिट डिजिट जो आ रही है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यू गॉट योर आंसर, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपका कंप्लीट चेक नहीं हो रहा। सो स्मार्ट रहना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप सेइंग कि 48 into 37, तो हमें पता है कि 48 2 से डिविजिबल है, और उन्होंने वहां पे ऑप्शन दे दिए 1773, 1775, 1777। तो ये तीन ऑप्शन आपके बेसिक ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि दे आर नॉट डिविजिबल बाय टू। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वही आंसर है। डू दीज थिंग्स डिविजिबिलिटी के बेसिस पे देख लिया, या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज अ चैप्टर जिसके अंदर जो नीचे की वैल्यू होती है बहुत इजीली निकल जाती है। तो आप चारों ऑप्शंस में से देख लो कि किसके डिनोमिनेटर में वो वैल्यू फिट हो रही है या उसी का फैक्टर है, तो वो आपको न्यूमरेटर फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही आप अपनी स्पीड तेज कर सकते हो एंड गेट इट एज अबाउट द रेस, विच वही हमें करना है। तो if less time is left or paper seems lengthy, do direct and easy questions first। क्योंकि जैसा हमने क्लैट 2023 में देखा था, तो वहां पे 5 6 क्वेश्चंस वर वेरी डुएबल, बट लोगों ने सबसे पहले दे सॉ द फर्स्ट सेट, दे सॉ द सेकंड सेट, एंड दे वर वेरी लेंथी। ऑब्वियसली सेट के बेसिस पे वो चेंज हो जाता है, बट उन्होंने वो देखे एंड इट स्टक एवरीवन इन देयर माइंड्स। तो इसीलिए सी की कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट है, इजी है, बिलीव मी। हर पेपर में 2 3 क्वेश्चन तो एकदम बोनस होते हैं। यू डोंट इवन नीड टू फाइंड द होल टेबल और समथिंग, मतलब तो आपको ऐसे भी टाइम होगा जैसे यू आर, आप पेपर कर रहे हो, आपके पास टाइम कम बचा है, यू गॉट ओनली 3 minutes एंड यू आर स्टार्ट थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग द डीआई, आखिरी 3 मिनट है। तो यू डोंट नीड टू डू द कंप्लीट क्वेश्चन पहले, जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस, गिव अ स्मॉल ग्लैंस एट द सब पार्ट्स, एंड पहले देख लो कौन सी इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन जल्दी निकल सकता है। तो द एट पॉइंट ऑल्सो सेज दिस, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ दिस ओनली, कि पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। और बहुत बार ऐसा भी होता है, तो जैसा सैंपल पेपर में हुआ था 2024 के, उसके अंदर बहुत सारा डेटा दे रखा था। तो हमने अगर सारी वैल्यू निकाली, बट एक्चुअली सारी वैल्यू मतलब की ही नहीं है। क्वेश्चन की सिर्फ 4 वैल्यू कहाँ आ रही थी और आपने वहाँ 8 वैल्यू निकाली। तो यू डोंट नीड टू डू इट, तो व्हाई वेस्ट योर टाइम फॉर द सेम। तो आपको पहले से जस्ट हैव अ ग्लैंस एट द क्वेश्चंस, एट द डीआईज, पहले कौन सा करना है, कौन सी क्वेश्चंस करनी है, कौन सी एक बार छोड़ने हैं। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचे, यू कैन इजीली कम बैक अगेन, बट इनिशियली डोंट गिव टाइम टू देम, क्योंकि वो दे ईट योर माइंड एज वेल। फिर यू फक अप इन द इजी वंस एज वेल। तो इसीलिए ट्राई अवॉइडिंग डूइंग these things. And the most important tip is implement these 9 tips. You will ace QT and eventually crack. So, any doubts? You can write in the chat box. Um, so I'll be stopping the screen share. Thanks a lot for listening me 1 घंटा बैठने के लिए, एंड इट विल हेल्प यू अगर आप ये सब इम्प्लीमेंट करोगे तो। आई वुड रिक्वेस्ट ये सब करना।
एंड आई एम हियर 2-3 मिनट, अगर आपको नॉन क्यूटी रिलेटेड भी कोई डाउट्स हो तो डू आस्क मी। जस्ट एक सेकेंड, आई विल बी टेकिंग थोड़ा सा योर टाइम, क्योंकि आई वाज मेंशनिंग ग्रुप स्टडीज हियर, तो आई हैव गॉट टू नेम माय ग्रुप हियर। स्पेशल एक्नॉलेजमेंट टू अंजलि, सोनाक्षी, आनंद, who were with me through my thick and thin. Any queries you can ask on Daksh 392024@gmail.com. अभी आई एम 2-3 मिनट इन द मीटिंग, एनी डाउट्स प्लीज आस्क। अर्जुन had asked, भैया which book is best for concepts? As I said, it's Arif Agarwal. Could you tell us the source from where we can learn these tricks? So these tricks can be learned. मैं आपको सारी ऑब्वियसली नहीं बता पाया बिकॉज आई हैड टू वाइंड अप द सेशन, बट यार मोस्ट ऑफ दीज यू विल फाइंड ऑन यूट्यूब या आरएस अग्रवाल में भी काफी है। बाकी यू कैन कम बैक टू मी इफ यू नीड एनी हेल्प। कैन यू प्लीज शेयर सम tips to aid compound interest? Okay, so I've got a thing with compound interest. मेरे को उसके I know some shortcut formulas and all, but Suleka, you can contact me through my mail. I guess it will take some time. Basic compound interest में what you can do is, अगर if you want to know from the conventional method, तो cubes, squares, ये सब अगर एंड टेबल्स, अगर ये सब आपको अच्छे से याद होंगे तो यही ज्यादा काम आते हैं। क्यूब्स एंड स्क्वायर्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तो जस्ट मेमोराइज देम, एंड अगर ये याद होंगे तो इट विल वर्क। बाकी आई गॉट सम ट्रिक्स, तो आई टेल यू। It's my ID is, so I'm sharing it here. Uh, yeah, I'm sending my mail. So anyone who wants to contact me, I've sent my email ID in the chat box. Any other questions? Oh, just a second. Uh, could you please tell us the source from where we can learn these tricks? Uh, mm, maybe uh, try writing on YouTube or somewhere, some tricks to enhance calculation or something like that. I don't know if it works. I haven't tried it, but
I've got a whole collection of these, so I couldn't have told them all in this session. From where you learn these tricks? Uh, Multiple sources, so quite a few of them, maybe from YouTube. Or I've been good at mental maths from a very long time, so I've been knowing them since long, and I'm a science math student, so that helps. Uh, Welcome, Anand. Welcome to Lika. Welcome, Amrika. So I guess that's it. Any other doubts? Welcome, welcome. Hope you enjoyed my session. If anything, revert me back. Yeah, Anand, you can do that. You can mail me. Yeah, that will work. Yeah. So thank you, everyone. It was pleasure meeting you all. Great giving you some knowledge. Hopefully, it will help you all. And yeah, that's it. Thank you.